أحمد رزق جانب. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सब अच्छे से होंगे, सब बखैरियत होंगे, सबकी प्रिपरेशन अच्छे से जा रही होगी, सारा सिलेबस आपने कंप्लीट कर लिया होगा। अब बस मुझे उम्मीद है कि आप रिवीजन मार रहे होंगे, तो बढ़िया है। हमारे साथ 10 लोग जुड़ चुके हैं। स्ट्रीम को जल्दी से जल्दी शेयर कीजिएगा ताकि बाकी लोग भी जो वो हमारे साथ जुड़ जाए और हम अपने आज की इस सेशन को स्टार्ट कर सकें। ओके, और मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप व्हाट्सएप में ग्रुप मत व्हाट्सएप ग्रुप में और व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज मत कीजिए, क्योंकि यहाँ थोड़े से डिस्टर्ब हो जाएंगे। इस सेशन को खत्म करने के बाद ही मैं आपके लोगों के साथ बात कर पाऊंगा। ठीक है, व्हाट्सएप के ऊपर जस्ट गिव मी थम्स अप इफ आई एम विजिबल एंड ऑडिबल टू यू। क्या मैं आप लोगों को दिख रहा हूं? आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम एवरीबॉडी। लव यू फॉर योर काइंडनेस, लव यू टू मिस्टर राज, जो भी हैं आप, प्यार भरा सपोर्ट आपका, मैं आपकी सपोर्ट को कभी भूल नहीं पाऊंगा। वट एवर आई एम टूडे, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। तो 13 लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कोशिश रहेगी कि 25 से 30 लोग अगर हमारे साथ जुड़ जाते तो हम अब ही इज वन ऑफ माय फ्रेंड जानिब। ये पॉलिटिकल साइंस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पेपर को आज डिस्कस करने वाले हैं। आपको बताएंगे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं जिनकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है एग्जाम में आने की, और आप अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। और आपको ये तरीका बता देंगे कि किस तरह से आपको लिखना है और कितना लिखना है। सर, आई एम द स्टूडेंट ऑफ 6th सेमेस्टर। हाँ, खास कर ये वीडियो जो है 6th सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी सेमेस्टर के स्टूडेंट भी देख सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि सेमेस्टर के स्टूडेंट देखें, जितने भी स्टूडेंट हैं उन सब के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आपको एक आइडिया मिलने वाला है, पेपर का पैटर्न पता चलेगा आपको। क्यों, कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा ही डेफिनेटली। सो प्लीज शेयर दिस स्ट्रीम, अपने बाकी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ग्रुप में 600 से प्लस मेंबर्स हैं। मैंने कुछ दिनों से कोई मैसेज नहीं की, आज मैंने पहली बार मैसेज किया है। माशाल्लाह ग्रुप के मेंबर्स भी बढ़ चुके हैं, ये आप लोगों की वजह से हुआ है। तो उन सबको लाओ यहाँ, और जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे, जो भी आपकी क्वेरीज होंगी, उन सबको हम हल करने की, उनको आंसर देने की हम कोशिश कर रहे हैं। और उनको पूरी तरह से आपको कोई डाउट ना रहे, खासकर इंग्लिश को लेके और पॉलिटिकल साइंस को लेके हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको सब क्लियर किया जाए। आई एम साइंस स्टूडेंट। कल या परसों मैं आप लोगों के साथ लाइव रहूंगा। मैं इंग्लिश पेपर को डिस्कस करूंगा, इंग्लिश पेपर का पैटर्न, और उसमें कैसे लिखना है, कितना लिखना है, आपको क्या स्किप करना होगा, 3 चैप्टर है और क्या पढ़ना होगा, वो मैं आपको लोगों को बता दूंगा कल। अच्छी तरह से मैं बोर्ड पे आप लोगों को वो सारी चीजें बता दूंगा। तो आज का सेशन जो है वो जानिब लेके जा रहे हैं, ये पॉलिटिकल साइंस का पेपर डिस्कस करेंगे। मुझे लगता है कि 17 स्टूडेंट्स पे अब हमारी स्ट्रीम जो है, यहाँ पे ये स्कोर रुक चुका है, कोई और आ नहीं रहा है। तो रीजन इसका क्या है ये मुझे नहीं पता। बहरहाल आपसे फिर से दरख्वास्त है कि अगर आप एक बार शेयर कर देते स्ट्रीम को ताकि बाकी लोग भी आ जाते तो बड़ी मेहरबानी होती। हम इस स्ट्रीम को जल्दी शेयर करते और फिर इख्तिताम तक भी पहुंचाना है।
ओके, लेट मी वेट फॉर अ मिनट, उसके बाद स्टार्ट कर देते हैं। हाँ, 15 स्टूडेंट्स हैं, कुछ आ रहे हैं और कुछ जा रहे हैं। Okay, Janib, just give them your introduction and start the stream. Janib, am I audible to you? Yeah, am I audible? I'm audible. You're audible to me. Am I audible to you? Start. Yes, yes. Start the stream. Okay. जो जो रह जाएंगे, जो इस स्ट्रीम को ज्वाइन नहीं कर पाए, उनके लिए ये अपलोडेड रहेगी वीडियो, बाद में भी देख सकते हैं, ये ऐसा कोई मसला नहीं है। लाइव देखने का अलग ही मजा होता है, तो इसलिए सोचा था कि अगर बहुत सारे स्टूडेंट आ जाते तो अच्छा रहता। तो चलिए आप स्टार्ट कीजिए। Okay. So, first of all, I would like to know, am I audible and am I visible? From the students' end, I would like to know, am I audible? अगर आप जानिब की बात सुन पा रहे हैं तो आप यस लिख दीजिए और ये स्ट्रीम स्टार्ट करेंगे। Okay. I guess everything is okay. So, before going to discuss the guest paper of Public Administration Semester 6, I guess so many people have joined, and yeah, it's our honor. So I would like to once again I would like to request you to share the link with your other friends as well, so that they can take the benefit out of this session. Okay. Shall I start? Let me know. So much. Before diving into the discussion, I would like to remind you that in our previous semesters, we have already studied the political theory. We have studied in our second semester, we have studied comparative politics. We have studied international relations as well, and Western thought in our fifth semester. And now in this sixth semester, we have public administration in our syllabus. So before discussing the guest paper, I would like to explain how the paper pattern is there, how the questions are asked, and what's the breakage of questions which is asked in our examination. So, if we will look at our question paper, it is in the three parts, in the three sections, rather, I should say. तीन पार्ट्स में हमारा जो क्वेश्चन पेपर वो ब्रेक कर दिया होता है। जो पहला सेक्शन हमारा होता है सेक्शन ए, उसमें से शॉर्ट आंसर पूछे जाते हैं, एंड द टोटल नंबर ऑफ दो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस इज 8. That means in our first section of our paper, 8 questions are asked, and they are all compulsory. Out of those 8 questions, we need to attempt all those 8 questions, and those 8 questions are carrying 3 marks each. And if you are going to multiply those 8 marks into 3, that's equal to 24 marks. That means in first section we have to take the benefit of those 24 marks, and in second section it's the medium short answer type question, and in which we have multiple choice option. We have 8 questions there, and 4 questions we need to attempt, and 4 questions carrying 5 marks each. And if you are going to multiply 4 with 5, that means these are in second section we have 20 marks, and we need to try to achieve our best possible percentage. For example, if there is in second section we have 17, 18 marks
try to get. In last section, long answer type question, we have 4 long answer questions and we need to attempt 2 questions only, and the questions are carrying 8 marks each, and those 2 questions are 16 marks. And if you're gonna plus this 16 marks, 24 and 20 marks, section A 24, section B 20, and section 3 16, and this is our 60 marks paper. And now if we are going to discuss the guest paper, so from first unit we have public administration, meaning, nature, and scope. And this question can be asked straight away, like what is the meaning, nature, and scope of public administration. And coming to the meaning, in meaning you can simply write what public administration is all about. You can give the brief definition of public administration. And in nature we have usually two views. One is integral view and managerial view. In nature you can give these two views and just briefly explain what integral view is all about and what managerial view is all about, and who are the scholars who are linked with those two views. And in the third section we have scope. In scope you need to remember this thing while explaining the scope of public administration. As you all know, the public and the scope of public administration is evolving as the subject is dynamic in itself. So the scope of public administration keeps on changing and vacillating. Thus, in scope of public administration you will simply explain the technique which is called as post-cop technique. You all may have studied this technique, and this technique can be asked in short answer as well. So you need to prepare this technique, you need to study this technique, what post-cop technique is all about. And there are 2 or 3 theories which come in the scope of public administration. One is traditional theory, and second is modern theory of public administration, and the fourth view is subject matter view, and the welfare and idealistic view. This is, I guess, the first question can be asked in this way, and you can prepare it, you can write it in this way. You can give the brief meaning, nature, and scope. I guess, am I audible to you? Am I audible? Yeah, thank you. So before discussing the second question, I hope first question you would have got how this question can be asked and how you would attempt this first long answer question, meaning, nature, and scope of public administration. And if you will look at the syllabus, second question is evolution of public administration as a discipline. As you all know, evolution is all about how a subject is evolved with time. So in evolution, you need to remember this thing, public administration, how public administration has been evolved as a discipline